वो लेवल 2 की पीडीएफ है क्या किसी के पास अभी? हाँ, अभी एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो ना वो। कल बहुत लोगों के मैसेजेस थे इसके ऊपर। नॉर्दर्न ट्रस्ट सीवी भी भेजा, क्वेश्चंस भी दे क्या। हाउ मेनी ऑफ यू आर अप्लाइंग? 3, 4, 5, 6, 7, 8 you? No? Why? हाँ? ओके। और कौन कौन अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्या? अच्छा, ठीक है। यू आर ऑल्सो नॉट अप्लाइंग, राइट?
नहीं, थोड़ा है रिसर्च. आई थिंक दैट ऑनलाइन स्टूडेंट्स एबल टू हियर मी. हेलो. हेलो. Yes, sir. ओके. और वो क्वेश्चंस जो मैंने भेजे थे, ओनली 2 or 3 people हैव रिप्लाइड ओवर देयर. क्यों ऐसा? एवरीवन हैज टू राइट दैट आईबीसी फॉर्मेट. हमने डिस्कस किया था. रेफरेंस डेटा मैनेजमेंट एंड ट्रेड लाइफ साइकिल. क्यों बाकी लोगों ने नहीं लिखा है? हाँ. हाँ? करते हैं नहीं, क्यों नहीं क्या ये किया है, वो क्वेश्चन है. व्हाट इज द इश्यू? अगले टाइम भी मिला था कल का तो. बट इट विल हार्डली टेक 10 to 15 minutes. एक क्वेश्चन कोई भी कितना टाइम लग सकता है? चलो एक का रीजन है, बाकी क्या कौन सा रीजन है बाकी लोगों का? कॉलेज के अलावा कौन सा रीजन है, चलो ये बता दो. मतलब आप दो तो एक सेम में हो, मैं समझ सकता हूँ. बाकी सबका कौन सा रीजन है भाई? अदर्स आर नॉट. हाँ. क्या हुआ? क्यों बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? हाँ. आईबीसी आपको करना पड़ेगा लेवल 2 के लिए, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि जहाँ तक मुझे प्रिपरेशन अभी आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है, सब T3 में ही घूम रहे हैं अभी. ठीक है. T1 T2 तो भूल ही जाओ. Even if I am taking this Tuesday or Wednesday also this level 2, I'm damn sure that none of you are going to get into T1 T2. ऐसे प्रैक्टिस से नहीं चलेगा. You need to put more efforts. I think you can follow this format. I think किन किन लोगों ने लिखा था what is reference data management, ये किसका है? हाँ. ओके. थोड़ा लंबा है. You can shorten it. क्योंकि इतना बोल नहीं पाओगे. प्रॉब्लम ये लिखने के लिए इजी है थोड़ा, लेकिन आई थिंक इट विल टेक लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. एंड वन अनदर वाज द ट्रेड लाइफ साइकिल. किसने लिखा है? आप. ओके एक मिनट, ये 74149 किसका नंबर है? 74. हाँ. ओके. ट्रेड लाइफ साइकिल, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ ट्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिसीट एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन थ्रू टू द सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड लाइफ साइकिल. टू पार्ट ऑफ द ट्रेड लाइफ साइकिल. ठीक है. आई विल पोस्ट अनदर 3 क्वेश्चंस टुडे. ठीक है. कल मुझे सबके पांचों क्वेश्चंस के आंसर चाहिए एनी हाउ. अदरवाइज यू वोंट बी अलाउड टू सिट फॉर लेवल 2. वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर. ठीक है. 3 more questions आई बी पोस्टिंग मैक्स बाय एंड ऑफ डे टुडे. और कल आप सब लोगों को जिनके आंसर्स आएंगे उनको ही मॉक्स में बैठने का मौका मिलेगा. अदरवाइज आई एम डायरेक्टली गोइंग टू पुट 0. ठीक है. यू नीड टू बी लिटिल बिट स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन. ऐसा मत करो. ओके. जिसका जीडी काम है.
नॉर्दर्न ट्रस्ट का जहाँ तक लग रहा है मुझे, ड्यूटीज में क्या है, प्रोवाइड डेली स्टेटस अपडेट ऑन प्रोग्रेस ऑफ एक्सेप्शंस, ओके, हैंडल रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, इंश्योर पार्टनर एंड क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, ट्रैक द ट्रेंड्स विद द डेली डेटा, ओके, responsible for identifying resolving problems, expected to use some initiatives, work effectively on knowledge of the core aspects and working towards becoming proficient. वो तो ठीक है. Next, supervisor responsible for handling and processing transactions for the fund accounting group within the client accounting practice, may be entry level with the opportunity to develop professionals. ये भी the team of service professionals, that is operation. Okay. Compulsory is valuation reporting. Okay. Direct research का role तो I don't think any of the company will be providing also. Pure equity research or pure directly financial research, I don't think you will be even allowed to sit for that. तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये लोग थोड़ा partially admin plus partially middle office का role can provide you. ठीक है, देख लो कब तक आपको वो बोला है, उसका कुछ आया फॉर्म क्या है, मतलब अक्षयतन क्या बोला है, कब कब तक, टुडे, ओके. हाँ एप्टीट्यूड है, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एप्टीट्यूड क्लियर करना है पहले, देन ओनली यू विल बी अलाउड. एप्टीट्यूड पता है ना कैसे होता है सबको, हाँ. Aptitude will be like, for example, 20 minutes, 40 to 60 questions will be required to be solved, but very fast and quick calculations. Maths होगा and थोड़ा बहुत वो reasoning, logical reasoning जो किसी ने अगर पता है तो. Communication test वो भी है, उसमें क्या है, हाँ, ओके, ठीक है, हाँ हाँ, बेसिकली फॉर बेसिक कम्युनिकेशन कर सकते हो क्लाइंट्स के साथ कि नहीं, उसके लिए है. और उन जो भी वो बोल रहे हैं वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं, फ्रॉम इंग्लिश पर्सपेक्टिव ओनली, डेफिनेटली. मतलब जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा थोड़ा उनको वर्कआउट करना पड़ेगा. एप्टीट्यूड में भी शायद आपको कम से कम आई थिंक 70-75% हैज टू बी देयर पासिंग. अगर 40 क्वेश्चन है तो आपको कम से कम हाँ. बट क्या होता है कभी कभी ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों का भी वो प्रैक्टिस नहीं होगा, फिर ऑल ऑफ अ सडन टेस्ट स्टार्ट करोगे ना तो वो थोड़ा पैनिक सिचुएशन, प्रेशर सिचुएशन आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली योर स्पीड गेट्स रिड्यूस्ड. ठीक है, तो वो थोड़ा बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट मेक श्योर कि थोड़ा मैथ्स के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशंस, और आई थिंक कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होंगे. और कहाँ पे देना है वो, ऑनलाइन है ना, लिंक दिया होगा ऐसा कुछ है. हाँ तो मोबाइल कैलसी है, हाँ तो अगर कैमरा ऑन है देन यू कैन डू इट, नहीं है गो फॉर मोबाइल कैलसी. एप्टीट्यूड क्रैक करने में इतना बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए. अनलेस एंड अनटिल इफ इट इज डायरेक्टली कैमरा ऑन देयर रिकॉर्डिंग देन यू कांट डू इट, फिर तो आपको वो थोड़ा अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा. ओके, ओके. एप्टीट्यूड में इतना चैलेंज नहीं होगा, चैलेंज होगा
हाँ डोमेन पहले तो, वाई बिकॉज आप लोग अकेले नहीं है वहाँ पे। कितने लोग जा रहे हैं वो पता नहीं है, दूसरे बैचेस से भी कितने हैं आई एम नॉट अवेयर अबाउट। बट हाँ लेवल 1 थोड़ा, और लेवल 2 प्लीज फंड अकाउंटिंग के बारे में जितने भी कुछ क्वेश्चंस अगर मेरे पास है तो डेफिनेटली आई विल शेयर इन द ग्रुप बाय टुमारो। अगर कुछ मतलब ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस है तो ऐसा कुछ मिलता है तो। हाँ, वो आपको अक्षता को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी दैट एंटायर ना प्लेसमेंट एक्टिविटी रिलेटेड थिंग शी हैंडल्स इट। तो मेरे पास वो अपडेट्स नहीं रहते हैं, अदरवाइज आई कुड हैव इजीली, बट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, वी नेवर नो कि वो कब आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, एक आध हफ्ते के बाद आ जाए, वॉट एवर डेट्स आर, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, अदरवाइज वो फिर प्रॉब्लम होता है थोड़ा, एक दिन में शायद फिर वो कवर नहीं कर पाओगे। तो लेवल 1 हैज टू बी वेरी कॉन्क्रीट, लेवल 2 थोड़ा बहुत करके जाना, प्रोसेसेस पता होने चाहिए, स्पेसिफिकली ट्रेड लाइफ साइकिल एंड this basic reconciliation and collateral management and all those things. Fund accounting I think has to be the core perspective because you are trying to settle the accounts, वो की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। तो जिसका अकाउंटिंग नहीं है बैकग्राउंड तो प्लीज गो थ्रू दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, और जेडी शायद कुछ ना कुछ तो मैं कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो आई विल शेयर इट। ठीक है, चलो एनी अदर क्वेरीज क्वेश्चंस एनीवन? परसुइंग लिख देना लास्ट में। और उस हाँ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कल जितने लोगों ने सीवी भेजा है दैट एग्जीक्यूटिव समरी सेम कंट्रोल सी कंट्रोल वी फॉर एवरीवन, उसको तो चेंज कर दो, लास्ट टाइम आई आल्सो मेंशन। क्या? हाँ नहीं, हाँ आप लोगों ने किया क्योंकि आप जाके आए हो इंटरव्यू, बाकी लोगों का आई थिंक हनान योर्स, और किसने भेजा था कल मुझे? नहीं नहीं इमाटिकस नहीं, दैट फर्स्ट 3 to 4 लाइंस व्हिच यू आर डिस्क्राइबिंग अबाउट योरसेल्फ, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। हाँ क्योंकि सेम डिस्क्रिप्शन शायद वो सैंपल में से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हुआ है, तो आपको थोड़ा ऐसा स्पेसिफिक लिखना है कि जिसमें आपका एजुकेशन, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस इन फंड अकाउंटिंग। सी समटाइम्स व्हाट विल हैपन इज यू नीड टू चेंज योर सीवी कॉन्स्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू द जेडी ऑफ द जॉब। ठीक है, तो मेक श्योर कि यू हैव दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड, वो थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं वहां पे। हाँ सी सीवी फॉर्मेट यू कैन फॉलो एनीथिंग, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक सीवी है। नो 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 नो, नॉट एट ऑल, डोंट पुट इमाटिकस लोगो इन योर सीवी, उसकी जरूरत नहीं। आई थिंक वो किसी ने तो पुट ऑन किया था। हाँ तो नया वर्ड फाइल बना दो ना क्रिएट करके, आपको वो स्ट्रक्चर आपको एज इट इज यू कैन टेक इट, बट रेस्ट ऑफ द अदर डिटेल्स देयर इज नो नीड टू पुट इट। इमाटिकस का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम यू कैन डेफिनेटली मेंशन ऑफ कोर्स इन दैट थिंग, बाकी जरूरत नहीं है। किसमें? एजुकेशन जब हम डालते हैं हाँ हाँ तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं कौन सी डिग्री, किसमें ये? अच्छा तो वो आपका जो, तो दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बैचलर और मास्टर्स डिग्री, दिस इज अ सर्टिफिकेशन कोर्स। तो आपका तो आपका अगर बैचलर है तो यू कैन राइट बैचलर्स डिग्री, अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है अभी तक, अगर किसी का एमबीए है तो यू कैन पुट इट मास्टर्स। ठीक है, वो आपको वो तो वैसे ही आप मेंशन करोगे ना सीवी में, वो तो लिख के आ जाएगा सब कुछ, बट प्रॉब्लम ये है कि वो सब कॉपी पेस्ट मत करना,
वन थिंग एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट अ लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन. शायद किसका मैंने कल से भी देखा था, जस्ट वन लाइन वाज देयर, लाइक फॉर एग्जांपल दिस आवर सिबॉप प्रोग्राम, और अंदर नीचे कुछ भी नहीं लिखे रहे. गेटिंग माय पॉइंट? आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, कि दिस सब्जेक्ट्स यू हैव स्टडीड और दिस टॉपिक्स यू हैव स्टडीड, और उसका एक सेंटेंस बनाना है, तो 1 or 2 सेंटेंसेस हैज टू बी देयर. आई थिंक मैंने आपको मेरा सीवी दिखाया था, नहीं दिखाया? हाँ, तो नीचे जिस हिसाब से एवरी इवन इन योर क्वालिफिकेशंस आल्सो, अगर एमबीए का कोर्स है तो सिर्फ फाइनेंस नहीं लिखना है. फाइनेंस में कोई सब्जेक्ट एक ऐसा लिखो जिसके बारे में आपका नॉलेज ज्यादा है, और एक ऐसा सब्जेक्ट लिखो जो जॉब से रिलेटेड है, भले ही आपको पता नहीं है लेकिन वो लिखना पड़ेगा, तो ही वो रेलेवेंस में जाएगा. हाँ, तो वो उस हिसाब से एवरीवन हैज टू मेक द चेंजेस. ठीक है, और इमाटिकस का वाटरमार्क वगैरह वो सब यू कैन रिमूव दैट. ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड. हुआ किसी का अलॉटमेंट कैंपस में? मिला? मिला? हाँ, वो तो आपने कितने अकाउंट्स? 1, एक में से एक लग गया, अच्छी प्रोबेबिलिटी है. अरे वाह, तो 1:1 वाला ही चल रहा है. चलो, बट आई थिंक दिस ग्रे मार्केट प्रीमियम विल बी अफेक्टेड नाउ, डेफिनेटली. कुछ तो गिरना चाहिए. ये कम हो गया ना, 30% था पहले, अब 20 पे आ गया. LIC 5 पे आ गया, ये माइनस में ही जा रहा है. दिस इज व्हाई आई एम स्टिल नॉट रिकमेंडिंग, भले ही कितना भी अच्छा हो, क्योंकि ऐसे ग्लोबल इवेंट्स कभी कभी बहुत इफेक्ट कर जाती है. चलो, लास्ट टॉपिक फॉर लेवल 2, रिकंसिलिएशन. हाँ, कौन है अकाउंट वाले जो आज एक्सप्लेन करने वाले हमको रिकंसिलिएशन? मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में. वन थिंग एंड सेकेंड, ये था हमारा कुछ असाइनमेंट भी दिया था ना कोई, तो एक केस स्टडी या समथिंग, या कोई तो था असाइनमेंट आई थिंक. हाँ 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 हाँ, ओके. हाँ, मिला क्या? एक भी नहीं मिला किसी को? चलो, एनीवन, रिकंसिलिएशन, तब तक हम वो स्टार्ट करते हैं. आ जाओ अकाउंट्स वाले. हाँ हाँ, उसमें अब पेयर फैक्टर निकालना है तो ऐसे ही निकाल पाओगे, थोड़ा बेस. किसको आता है रिकंसिलिएशन? किसी को भी नहीं है अकाउंट रिकंसिलिएशन? नहीं नहीं, नॉट डेफिनेशन, जस्ट हैव अ ब्रीफ इंट्रो. चलो, नो इश्यूज, लेट्स स्टार्ट ओनली. ठीक है. So what is basically reconciliation? It is the process where you will be comparing two different sets of data, and any of the discrepancies in that particular data will be removed through resolution, including formal reporting and escalation. Reconciliation of positions and trades within the internal books and records with the outside world is of utmost importance in ensuring that any bank remains in control of its assets and liabilities. So basically, you will be just making sure that whenever you are entering any accounting entries from different perspective, basically, you need to check that both the data sets are same. There has to be no manual error, or there is to be no any accounting error over there. Otherwise, it will be difficult for you to individually find those entries in the books of accounts. ठीक है? ओके, सो डिस्क्रिपेंसी कैसे हो सकती है? से फॉर एग्जांपल, यू आर डायरेक्टली डीलिंग विद द क्लाइंट, तो आपका एक पर्टिकुलर एक लॉग होगा या जर्नल लॉग होगा जहां पे आपने एंट्री मेंशन किया हुआ है. ठीक है. एंड सेकंड थिंग, डेटा सेट 2 में क्या होगा? In that particular case, another party or any other entity of your organization will be maintaining separate books of accounts. Now, you and that particular entity has to make sure that both the entries are correct. Okay. Otherwise, it might happen that here there will be certain different details out there, and here certain other information will be mentioned. Say for example, यहाँ पे 10 मिलियन का डेबिट का एंट्री बोल रहा है और यहाँ पे 10 मिलियन का क्रेडिट का एंट्री बोल रहा है, तो फिर वो उसको बोलते हैं डेटा डिस्क्रिपेंसी. ठीक है. फॉर्मल रिपोर्टिंग तब जाके होगा व्हेन यू आर ट्राइंग टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर डिस्क्रिपेंसी. ठीक है. अगर नहीं हो रहा है किसी भी हालत में सॉल्व, यू नीड टू रेज अ टिकट. टिकट पता है ना कुछ लोगों को, मतलब काम किया तो पता होगा. अदरवाइज वैसे भी हम बहुत सारी जगह पे टिकट रेज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वाला तो बहुत सारा है. ठीक है. नाउ दैट पर्टिकुलर टिकट इज पर्टिकुलर नोन एज द एस्केलेशन.
Escalation will be like you are filing a complaint to the senior authority or to the senior management seeking for either additional information or seeking their feedback regarding how to solve this given problem. अगर आप दोनों के एंड से भी नहीं हो रहा है तो तब जाके आपको सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना है. ठीक है. सो टीएलसी ट्रेड लाइफ साइकिल में कहाँ पे आएगा? फ्रंट ऑफिस में ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड बुकिंग, मिडिल ऑफिस में ट्रेड कैप्चर, एनरिचमेंट एंड वैलिडेशन, बैक ऑफिस में ट्रेड मैचिंग and settlement and field management, and finally reconciliation will be done. So just write where reconciliation will be happening in the TLC process, where reconciliation will be happening in the TLC process. So front office, middle office or back office mein all the three phases of your operational roles will be carrying out this reconciliation process to ensure that the data remains the same in front office, in middle office and in back office. Any issues that will be rising, that is known as discrepancy or the data error, and that you need to resolve through either escalation or through your team meetings. Okay. Now see this example. For example, a settlement system is there. In the settlement system, 100 shares of any company XYZ was bought and US $2,000 were being provided. So stock के ledger में क्या आएगा? Statement will be 100 shares and यहाँ पे $2,000 will be exchanged. This is known as the stock statement, and this is the cash settlement system or the cash statement particular entry which will be provided whenever you are buying 100 shares of that particular company. Okay. Now, see external reconciliation कैसे होता है? For example, internal settlement posting भी होगा जहाँ पे एक system ledger maintain किया जाएगा. He will be posting all the details of that particular stock. There will be a stock ledger where all the stocks will be mentioned or where all the entities related to all the transactions of that particular equity or any other cash market or any money market instruments will be mentioned. Another ledger will be related to like how cash is being maintained for that particular transaction. अगर 100 shares लिए हैं तो कितना पैसा invest किया है, that has also to be mentioned. I think normal accounting entry है. Whenever you are debiting, you will be debiting that $2,000 and crediting 100 shares in your client's account. And as your part, it will be like you are debiting from your side 100 shares and crediting $2,000 in your account. Okay. Now different types of categories are there. Yeah, write one particular question. What is Nostro account? NOSTRO. What is Nostro account? Now, any of this external reconciliation, the major risk that will be involved can be misposting of the data or related like something we can say that the trade details which we are trying to enter are being as a wrong information. कहीं पे एक जीरो कम हो गया, एक एरर मैंने न्यूज वाला भेजा था ना ग्रुप में, कोई तो न्यूज या हाँ सिटी बैंक का, तो ये हो सकता है प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल इफ यू आर वर्किंग इन दिस specific accounting rules. Okay. Second error can be inaccurate or missing books
facing the exchange. For example, if you are not able to get the desirable entry of the transaction from the exchange itself, exchange का भी तो data आएगा ना कि for given today's date such and so transactions have been carried out for this particular client and all those details are mentioned over there. तो उसका ledger वो अलग से maintain करते हैं, but we need to cross check whether their ledger details are maintained with our ledger or not. Okay. Third error or third risk factor can be incorrect entitlement calculation due to obsolete internal static data. Now, if it is a money market instrument data which is being recorded, it might happen that some of the static interest rates will be already there in the system. And you, without checking that these particular rates have been updated or changed or modified, you are continuing with the same interest rates. जैसे वो T-bill का था, say for example 3.72% was there in the system, but अभी वो 3.5 हो गया and you are not aware about it. But आपने post कर दिया entry कि this amount of T-bills have been purchased by this client and that particular entry has been recorded in the ledger. लेकिन interest rates which will be paid on this T-bill is 3.72%. Actually होना चाहिए था 3.5. Okay. Now that data mismatch will occur with that particular money market player या counterparty जो भी है, along with the intermediary who is involved over there. Okay. Then internal reconciliation, that is more related to the internal systems. Basically, you should be aware about which are the places where errors can come from the reconciliation perspective. कहाँ पे कौन सी टाइप की errors create हो सकती है और उसके solutions क्या आ सकते हैं, that you should be aware about. That is like more of a gist of this particular chapter. Okay, there is nothing else otherwise in this reconciliation. The only thing important over here is you need to make sure that all the accounting details entered for all the transactions are correctly matched with your party, counterparty, intermediary as well as exchange. ठीक है, कहीं पे भी discrepancy है, you need to contact them. You need to either file a complaint or raise that particular ticket through escalation and ask additional details. Sometimes it might happen that your senior level authority वो बोल देंगे अपने clients को just because of to maintain that better relations, वो बोल देंगे ठीक है अभी आधा पेमेंट कर दो बाकी का बाद में करना. Or as they can say, don't pay in US dollars, you pay in this pounds or any other currency, but that is actually not allowed as per your system. तब आपको जाके वो problem आएगा. Then you need to escalate your ticket to your senior level, keep them posted about all these particular things. तब जाके वो email writing का वो जो किया था ना soft skill, तब जाके वो वहाँ पे काम में आएगा. ठीक है. So how to write formal emails वगैरह वो सब important होगा उस time पे. ठीक है. So start even practicing writing such emails. So can even just check how to write a formal email letter. ठीक है. When you are complaining about any particular issue within the organization. Reconciliation is a critical step in the trade life cycle, and if not done correctly, it can lead to several risk and financial loss. There are various categories of reconciliation. For instance, depository versus stock reconciliation, where you compare the internal equity system with the central security depositories. Internal हमारा भी depository होगा. You are comparing, for example, directly with the details of the CDSL. ठीक है? If this is not done accurately, the client would have wrong stock positions in the internal books. Okay, so just write one important statement that reconciliation is an important step in the trade life cycle. Please remember or highlight that thing, the trade life cycle. Okay? And if it is not done correctly, it can lead to several risks and financial loss. I have already, can you see that particular screen? Yes. With the thing which I have highlighted, just write it down. Now next, where you will be checking the reconciliation will be
in the cash reconciliation ledger versus the Nostro account. The Nostro account is generally being used for the foreign clients, wherein the internal cash system of your organization is directly compared with the agent bank system or the advice generated over there or the invoice which is being generated over there. Why? Because your foreign clients will be having their accounts in the foreign particular banks where they will be translating their cash details or they will be exchanging their cash from over that particular bank to your current trading account. So say for example, your client is in UK, is transacting from his bank account directly putting into the Demat account in India and then carried out the transactions. Then you need to check that whether the trading account transactions are having the same details compared to that particular amount which is exchanged over that UK bank account. ठीक है, अगर वहां पे वो एक्सचेंज रेट का भी एरर आ रहा है, then also you need to cross check it and you need to overcome it. In exchange reconciliation, the front office bookings are compared with exchange executions. If this is not done accurately, would result in inaccurate or missing booking facing the exchange. Next is the custodian reconciliation, also known as the broker. So write one question: what is custodian reconciliation? What is custodian reconciliation? कल कैसे ट्रैप किया नहीं मार्केट्स ने, कल एकदम से ट्रैप, आज वापस ट्रैप, डबल ट्रैप. हाँ, तो उसका वो फिर उस हिसाब से रिवाइज हो जाता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल वो 1000 1100 1200 सीई मतलब स्ट्राइक प्राइसेस ऐसे होगी, वो 100 110 120 वाला जैसे आईआरसीटीसी में हुआ है. आईआरसीटीसी में पहले वो, हाँ डेफिनेटली होना चाहिए, बट लेट्स बढ़ जाना चाहिए. हाँ हाँ हाँ, वो बढ़ना चाहिए. बट रादर बाइंग दैट F&O in Tata Steel, now go for stocks in Tata Steel. That will be my pure advice. Don't go for कैश एंड कैरी, मतलब डिलीवरी इतने चीप वैल्यूएशन पे नहीं मिलेगा. एंड डेफिनेटली एक था वो 1000 पे जाएगा. अब जस्ट इमेजिन अगर 5 साल में भी जाता है तो भी 10 times योर मनी आर गेटिंग जनरेटेड. नाउ दैट इज ऑल्सो वेरी रिस्क फ्री. ठीक है, अभी के लिए धीरे धीरे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग. इसका अप्रोच कैसे होता है? बाय ओनली 5 shares in 1 month. वो SIP वाला मोड एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे. एंड डोंट लुक एट इट एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ ईयर्स. ठीक है, तो एवरेज कितना आपको एवरेज ये देखना है कि एक साल में 100 शेयर्स आ जाने चाहिए कैसे भी हो करके. अनदर 100 शेयर्स आफ्टर 2 years और आफ्टर 3 years 300 शेयर्स, बस दैट्स मोर देन इनफ. अब 300 शेयर को ऐसे ही छोड़ दो. The amount of dividend that you will be getting, the amount of any other extra capital appreciation, everything will be taken care of. और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैंने ये देखा है कि दे डेफिनेटली जनरेट वेल्थ फॉर देयर इन्वेस्टर्स, बट ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में उतना स्पीड से नहीं बनता है, लेकिन जिस दिन बनता है तो उनकी तरह किसी का नहीं बनता है, ऐसा है उसका. तो टाटा और आई थिंक टाटाज विल बी गेटिंग मोर वैल्यूएबल. टाटा पावर को आई थिंक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मिला ना कुछ तो बड़ा, समथिंग कुछ 5500 CR या समथिंग, या टाटा पावर का कुछ तो है. तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज आर एक्चुअली गुड, एटलीस्ट ट्रस्ट वर्दी, नोन फॉर दैट पर्टिकुलर क्रेडिबिलिटी ब्रांड, इसलिए. बट हाँ, वो लाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे. सी रिलायंस इज नाउ वेरी कीन. भाई उसको तो पहले वही एक जगह पे दिक्कत है, कैसे भी करके अदानी को कम्पीट करना है. नाउ डायरेक्टली दे कांट कम्पीट इन सर्टेन वेज, so they need to channelize, they need to go for merger acquisition या joint venture या anything. अब वो कोई भी अप्रोच से जाए, it doesn't matter. तो chances are there they can come, but वो टाइम लगेगा, इतना जल्दी एग्जीक्यूशन में जाता नहीं है सब कुछ. बट माई पर्सनल रिकमेंडेशन टाटा स्टील अगर ये प्राइस पे मिल रहा है तो मैं तो ब्लाइंडली प्ले कर लूंगा उसमें.
हाँ वो, हाँ डेट अभी शायद नहीं आया, रिकॉर्ड डेट नहीं आया, वो देखते हैं अब, जब कभी भी होगा वी विल सी टू इट, बट वही एक अप्रोच रखना है ना कि 5-5 शेयर्स यू कीप ऑन बाइंग एंड योर टारगेट हैज टू बी, भले वो 60 का टारगेट है लेकिन कैसे भी करके उसको 100 पे पहुंचाना है और वो एवरेज हो जाएगा। तो आपका एवरेज कम से कम मान के चलो कि 2 साल का 250 भी एवरेज है, तो 2 साल के बाद वो 500 तो आराम से पहुंच गया होगा। बट स्टिल यू डोंट नीड टू सेल दैट, यू नीड टू ओनली बुक योर प्रॉफिट्स व्हेन इट इज गोइंग फॉर 1000। ठीक है। और जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी थोड़ा रिवैम्प होगा, कंसिडरिंग द आई एम एक्सपेक्टिंग मोर रिवैम्प इन द नेक्स्ट दिस आवर सेंट्रल इलेक्शंस, मतलब अगर टू कब है 24 में है ना कि 23 में है अवर इलेक्शंस, 24 ना, हाँ। तो 24 में अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है वापस, आई एम एक्सपेक्टिंग नितिन गडकरी टू बी नाउ इन वन ऑफ द प्रोमिनेंट रोल्स, क्योंकि अभी सेंट्रल लेवल पे भी तो कोई ऐसा होना चाहिए ना कि मतलब इनका एक बैक एंड हो स्ट्रॉन्ग लेवल पे। अब योगी तो नहीं आएंगे, बचे अमित शाह तो होम मिनिस्टर है, तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर है नहीं उनके अलावा अभी। बाकी सब है लेकिन वो आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू क्लिक अनलेस एंड अंटिल बीजेपी इज कमिंग। बट वो शायद आ जाना चाहिए, आई थिंक जिस हिसाब से अभी है, आई डोंट थिंक कि वो प्रॉब्लम आना चाहिए। स्ट्रेटेजी के अलावा से एट स्टेट लेवल पीपल एक्सपेक्ट कि उनका कोई भी गवर्नमेंट वो चलेगा, बट एट सेंट्रल लेवल दे वांट बीजेपी, वो स्टेबिलिटी चाहिए उनको सेंट्रल लेवल पे। अब बाकी सब पार्टीज का कैसा है कि दे आर मोर ऑफ इनटू दैट रीजनल थिंग ओनली। टीएमसी ले लो और आईएनसी यहाँ पे ले लो, आप ले लो, आपका तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। पता नहीं वो कब कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आएगा कभी। सी टू गिव सो मेनी फ्री बीज इन द नेम ऑफ इलेक्शन इज नॉट द वे टू रन द पर्टिकुलर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दैट इज नॉट थ्रू विच यू आर ट्राइंग टू, मतलब आपको गवर्नमेंट इसलिए बनाया है सो दैट बैक एंड में इंप्रूव करो ना, फ्रंट एंड में क्यों जा रहे हो। और कोई इसी एक चीज अच्छा है कि चलो लोअर क्लास इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट फ्री वाला थिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री वाटर वगैरह। अब वो कितना बेनिफिट कर देगा, मैक्सिमम मान लो 25,000 का बेनिफिट है, बट इन द लॉन्ग रन वो आपका 1 लाख का लॉस चल रहा है, क्योंकि डेट बढ़ रहा है ना गवर्नमेंट का, तो वो कौन देगा अल्टीमेटली, फिर आ जाएगा स्टेट इनकम टैक्स वगैरह, जीएसटी एवरीवेयर विल बी इंक्रीज। So at the end of the day, if you are not picking from front and you are trying to do from that back end, so that is not the correct approach. Huh? Overseas, yes, no, citizen of India, overseas citizenship of India, yes, OCI, and PCO, huh? No, of course no. You are not sitting in India and having that. No, no, no. Of course no. नहीं, कोई नहीं जानता हूँ किसी को। और अगर है भी कोई, मतलब अगर रिलेटिव्स भी है तो भी ना मना करना है हमको। रीजनेबल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग, मतलब कौन सा रीजनेबल एडजस्टमेंट? ये शायद क्वेश्चन होगा डिसेबिलिटीज के लिए, तो शायद नो आना चाहिए, क्योंकि कुछ डिसेबल्ड पीपल अगर होंगे तो उनको मतलब जैसे रहता है ना कि टाइपिंग हो नहीं पाएगा या बोल नहीं पाएंगे या देयर नीड सम इंटरप्रेटर और समथिंग लाइक दैट। डिसेबिलिटी वाला एक एक्ट है ना हमारा, तो दैट इज आई थिंक वो होना चाहिए, इसलिए वो आपको कोई दे आर प्रोवाइडिंग हाँ एनी सप्लीमेंट्री एंड दैट्स इट। Yes, yes, because say for example, if Northern Trust is sending you tomorrow UK, then you need to have UK work visa over there. तो इनको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। हाँ, खुद से कर ही नहीं सकते हो। वर्क स्पॉन्सरशिप वीजा इज मेंट फॉर दैट, द कंपनी इज स्पॉन्सरिंग यू ओनली, यू कांट स्पॉन्सर योरसेल्फ। तो हर कोई मतलब भाग जाएगा यूके या यूएस जो भी है। दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस दैट नो वन इज एबल टू क्या बोलते हैं गेट टू एनी ओवरसीज कंट्रीज। ओवरसीज में अगर चाहिए तो फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल इज पेइंग लाइक एनीथिंग, 50-60,000 पाउंड तो स्टार्टिंग है वहां पे। तो जस्ट इमेजिन द पैकेजेस, 50-60 लाख पर एनम हो गया डायरेक्टली। लेकिन वही है ना कि स्पॉन्सर तो करे पहले फिर वहां पे जाएंगे, वही नहीं होता है। एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस इज we have completely understood the Indian capital market, we don't know anything about London Stock Exchange और उनके मनी मार्केट्स।
and we don't know their running system or their economy. इसलिए उनको ये लगता है कि ये बाकी सब जानते हैं लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, तो so they will be completely avoiding us. Otherwise बहुत सारी opportunities are there even today. यही सब चीजें इनके हेडक्वार्टर्स वहीं पे है यूके में. Another challenge will be you need to learn any of this foreign languages. मैंने एक बार बोला था शायद, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच जो भी है, तो ये इट्स लाइक मोर फ्रिक्वेंट ओवर देयर. कोई एक आता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है. वाई? बिकॉज most of the offices or most of the branches of this offices are in across the Europe. तो clients तो वहीं के हैं. अब वहाँ के clients ऐसे हैं कि इनको local languages जैसे हिंदी या हमारी मराठी अच्छी आती है लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे तो कुछ नहीं आता है. उनका ऐसा हाल है. Okay. So custodian reconciliation, also known as the broker reconciliation, wherein the stock and the cash of the custodian are matched against the internal systems. Inaccuracy during this stage would result in wrong settlement in the stock or cash processed, along with wrong position of the front office versus the custodian. Finally, we also have intra-system reconciliation where the front office versus middle office or front office versus back office or middle office versus back office data will be compared and checked whether the data is correctly entered in all the three systems or not. So, right, another question, what is intra-system reconciliation? Okay. Now, life cycle of a typical reconciliation कैसे होगा? Reconciliation production. So reconciliation unit, you should be the owner of that, where you will be starting all the processes of reconciliation. Second, you need to prepare the statements or the books of accounts accordingly as per the regulations of the organization. And finally, you need to review all the data which is being entered in your books of account versus the books of account of any other entity. Okay. Now, this is how you will be actually trying to connect your data with external systems. Okay. What is reconciliation reporting? It is performed by reconciliation preparer responsibly for timely compilation and distribution of the data to reconciliation exception owners and the line management. So your first point will be you need to prepare the report and identify those transactions which are not getting correctly matched. Third, you need to identify the solutions or bring about resolution about all these transactions and make sure that there will be no further inaccurate data published in the entire report. What could be the possible risk we will be trying to address? The settlement system has the full population of trades. The stock or cash has been moved from the bank account without one's knowledge. मतलब ये loss होगा in these particular cases. So these are the case where you will be facing loss. Actual loss arising from human and systematic error or delays and fraudulent activity and poor decision making arising from the inaccurate information. This is very, very important topic over here. What are the challenges in the reconciliation address? Okay, important question over there. Or you can even write this question, from which errors we need to address reconciliation. We need to address reconciliation.
So in any of these four circumstances, you need to carry out reconciliation. ठीक है? Inaccurate data होगा तब, या poor decision making from senior management, या फिर human or systematic errors, या settlement system has been comprising of all those inaccurate trades, and last one will be stock details or cash details are not getting correctly matched with your bank account. Okay. Now, what is the integrity of this reconciliation framework? Authenticity of the data inputs. All the data sets for reconciliation must originate from the sources from where they are getting generated. Now, source of generation मतलब, for example, अगर मेरे बैंक अकाउंट से मैं आपके सिस्टम में पैसा डाल रहा हूं और वहां पे गलती अगर हो रहा है, तो the base through which you will be checking that information, so you will be comparing my personal bank account. Okay, you cannot cross check any other details or any other reports from any other sources. डायरेक्टली जहां से वो ट्रांजेक्शन का इनिशिएशन हुआ है वहां पे जाके ही आपको चेक करना है. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग. Second, the defined roles within each step of the reconciliation life cycle must be appropriately allocated to all the individuals to ensure independency and integrity. Integrity of the data is always important, and you all need to work independently. You can't be dependent for any data or sources over other individuals. So individuals involved in reconciliation production must not be able to create or change the underlying data in the source systems. Highlight this one or write this one. Individuals that are involved in the reconciliation process must not be able to change the underlying data. मतलब मेरे बैंक अकाउंट का अगर स्टेटमेंट हुआ है तो वहां पे जाके वो चेंज नहीं कर सकते. Then the duties of reconciliation preparer and reconciliation reviewer, जो प्रिपेयर कर रहा है रिपोर्ट रिकंसिलिएशन क्या और जो रिव्यू कर रहा है, this two duties has to be assigned to two different individuals. A reviewer cannot be a preparer and a preparer cannot be a reviewer. ठीक है? Documented evidence of regular commentary of progress towards resolution has to be updated. Formal governance, यहाँ पे most important चीज एक याद रखना, ethics कभी कभी बीच में आएगा. Why? Because your seniors in some way will try to influence you for some transactions. So please make sure that you do not breach that particular code of duty. और उस टाइम पे अगर कुछ ऐसा कुछ कोई बोल रहे हैं, उनको एक ही चीज बोलना है, प्लीज ईमेल मी. डॉक्यूमेंटेड एविडेंस रखना, ओरली कुछ भी मत कर देना वहां पे जाके. अदरवाइज इफ टुमारो समथिंग गोज रॉन्ग एंड देन इफ यू ब्लेम कि इन्होंने बोला था इसलिए मैंने कर दिया, तो डायरेक्टली बोलेंगे मैंने आपको कब बोला था. ठीक है? प्लीज कीप दिस प्रैक्टिस ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन एवरीवेयर. अगर छोटी बात भी है तो भी पुट इट डाउन इन ईमेल, अगर बड़ी है तो भी पुट इट डाउन इन ईमेल. ठीक है? अदरवाइज वो फिर बहुत प्रॉब्लम कर सकता है. Okay, now types of reconciliation are related to bank account, internal books of accounts, treasury, securities, portfolios, and cash management. So write what are the different types of reconciliation. What are the different types of reconciliation? ऐसा लग रहा है ना कि आप जल्दी लेवल 2 खत्म हो. Trade comparison and trade reconciliation, the process through which the two parties are carrying out the brokerage transaction, the buy side and the sell side agree on certain components of the security transaction. These components will include these details. Buy side है कि sell side है, पहले वो देखना है. कौन सी security में transact करने हैं वो देखना है. Specifier, insurer and the financial instrument which is traded. Contra broker, the firm with which the trade was executed. So of course your counterparty. Quantity मतलब how many number of shares, bonds, T-bills, options, etc. traded at what price. Of course accrued interest will of course come into the picture if there are bonds, and at such time both the parties need to make sure that all these details are getting correctly matched. So just write what are the details that you need to check for the reconciliation process.
Done, everyone? Okay. Now trade comparison or trade matching process कैसे करते हैं? If it is electronically through a designated clearing corporation or clearing house, you need to manually do it. The determination of whether or not a security is eligible for comparison through an electronic clearing house is also checked. The classification is made by the individual clearing house, and this classification is made based on certain criteria which is already decided by the companies, or it is decided by both the party and the counterparties. And securities which are not eligible for the services of an electronic clearing house are compared ex clearing. So of course ex clearing will be done manually. Okay, otherwise electronic system से directly data compare हो रहा है from the clearing house to our transaction details, then there will be not much efforts to be put over there. Now what is ex clearing comparison? It simply means that the trade comparison process is performed without the services of electronic clearing house. It is a manually comparison process that is performed by the brokerage firms when the traded security does not meet the eligibility standards. Okay, so just write the question, what is ex clearing comparison? What is ex clearing comparison? बैंक निफ्टी में एक चीज अच्छा होता है, अगर इन द फर्स्ट आवर 500-600 पॉइंट्स गिर गया है ना, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रैश बाय अनदर 500 पॉइंट्स इन द रेस्ट ऑफ द डे. लेकिन वो पेशेंस थोड़ा टेस्ट करता है, तो मतलब एक दिन में समझ लो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स आर वाइप्ड आउट. ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखना. ओके, कॉल लिया है? कॉल लिया है? अच्छा, पुट लिया है. हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, कॉल क्यों ले रहे हो अभी? कितने लिए लॉट्स? हाँ, प्रॉफिट. अच्छा कर लिया, बुक कर लिया है. कितने लॉट से? कितने? 1500. ठीक है, 25 नहीं 20 लॉट्स फिर भी. और कितना हुआ? सही है. मतलब कब? आज सुबह लिया, कल कैरी फॉरवर्ड अभी? बहुत रिस्की है. यू आर स्टिल नॉट यू आर गेटिंग एडिक्टेड नाउ टू बैंक निफ्टी. लेकिन अभी वो रिस्क, वो पोजीशन साइज कम करना है, बहुत कम ज्यादा है. पहले एक लॉट से 1 साल प्रैक्टिस ही करो अगर किसी को करना है तो. जस्ट कीप 1 लॉट. उसमें अच्छा ये रहेगा कि लॉन्ग यू विल बी एबल टू स्टे डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर मैं लॉस में भी जा रहा हूँ तो. ठीक है, क्योंकि ट्रेंड से पता चल जाता है कि वो नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, देन डेफिनेटली आराम से 100-150 पॉइंट मिल जाते हैं उसमें. ठीक है, एवरेज कभी मत करना बैंक निफ्टी में. एवरेज क्या होता है? हाँ, मतलब पहले 400 पे खरीदा, अब 400 से 300 पे आ गया, दूसरा लॉट खरीदा, 200 पे आ गया, और एक लॉट खरीदा. वी आर ट्राइंग टू कीप इट. हाँ, वी आर रिड्यूसिंग अवर कॉस्ट. या इन अनदर वर्ड्स, तो अभी मेरा एवरेज आ गया 300 पे. अब 300 पे जितना भी ऊपर जाएगा दैट विल बी माय प्रॉफिट. बट प्रॉब्लम ये होता है कि फिर नीचे ही चला जाता है और वो अपने प्राइस पे कभी आता ही नहीं है अगर ऐसा कुछ दिन है तो. ठीक है, ओके. Data for comparison that you need to check is trade date, settlement date, security which are traded, quantity which is traded, transaction price, accrued interest, and net or settlement dollar amount. ठीक है, these are particular details which you need to check for data comparison purpose. Okay. Your counter broker or the contra broker will be agreeing with all these trade details, and he needs to sign and return it back to our firm. तब जाके हम reconciliation process को start कर सकते हैं. Unless and until he is not agreeing to have a comparison for all these different types of data, we cannot start or initiate our data or any other reconciliation process. Okay. Now, when a client is buying the securities through a brokerage firm, the net amount of the trade will represent the amount the client must pay the firm for the transaction. The net amount of a buyer trade also includes the cost of the stock, that is principal amount, plus additional fees. Additional fees हमने already देखी है. Brokerage होता है, security transaction tax, GST, right? Every other tax that will be also included, charged by the broker. Assume that Sam buys his broker 100 share stock at this particular price, 15.75.
Sam will agree to pay this broker a commission of 5 cents per share. So 5 cents into 100 shares will be the brokerage commission, and hence the principal amount now turns to 1575 for this particular transaction. तो कैसे होगा? The $5 commission is now added to the principal amount to arrive at the net amount. Quantity कितना था? 100. Price कितना है? 15.75. ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो? 15.75 into 100 which is 1575. नाउ क्वांटिटी वापस 100, कमीशन रेट कितना है? 5 सेंट्स, मतलब 5 पैसा हुआ वहां का, ठीक है। तो 5 पैसे into 100 shares is 5 rupees. So that 5 rupees is now your commission. So your net amount will be 1575 plus rupees 5, which is your 1580. This much amount you will be paying across your transaction. You will not pay 1575. Okay. Now had he sold the shares through his broker, the net amount would have been 1570. Okay. तो कम से कम आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू इससे बढ़ेगा तब जाके, तो योर ब्रेक इवन पॉइंट विल बी नॉट 1575, इट विल बी 1580. ठीक है, उसके ऊपर जाएगा तो ही हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होगा, अदरवाइज दैट चार्जेस विल बी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. Risk of not performing broker reconciliation. Trade incorrectly executed by the broker leads to the issues and confirmation and settlement. Incorrectly alleged trade. Trader which is not executed by broker but broker be alleged the trade to as the counterparty. So basically यहाँ पे वो broker की बात चली है. अगर broker ने कुछ गलती से incorrect details या mismatched details डाल दिए हैं, if we are not performing our reconciliation, it will lead to different results. Okay, so this is more from, so just write one question. How reconciliation needs to be carried out? How reconciliation needs to be carried out from broker perspective? Done, everyone? स्लिक था ना नाम, क्या नाम था? नहीं, वो ऐसा नहीं है. जस्ट मिनट, स्लिक नाम कहाँ पे था? Actually, it has to be 1580 plus 5 because even in the selling that particular transaction, it has to be adding. Yeah, charge. So 1585 होना चाहिए, but maybe some printing error over there something. Now, cash management is very critical activity for every investment bank. Trade-off between liquidity and profitability is, of course, a big challenge banks strive to achieve. Bank always looks to invest excess cash to earn income, not leaving the funds dormant in the bank account. कैसे करती है? Overnight हमने देखा था interbank lending. अगर 2 दिन भी एक्स्ट्रा कैश है तो डायरेक्टली दे विल बी डिपॉजिटिंग आइदर इनटू आरबीआई और एसबीआई, बेसिकली टू गेट दैट रिवर्स रेपो रेट ट्रांजैक्शंस. ठीक है, बैंक हैज टू फंड इट्स अकाउंट appropriately to avoid any overdraft or settlement fail.
Better cash management process results in lower cost of handling cash and improves investment decisions. Cash management is normally a separate term within the treasury operations. So it basically follows up with the product areas such as equity, credit derivatives on respective cash inflows and outflows. Okay, but यहाँ पे इतना cash के related नहीं आना चाहिए. Just like we will see the processes for this. Internal process, of course, bank balance has what is the bank balance current level as of now that needs to be recorded in the as per the previous date. The system cash projection batch file has to be maintained by the bankers every day so that उनको पता चलेगा कि कितना excess cash है हमारे पास and whether we can give this particular thing for the reverse repo rate thing or not. Cash adjustments will be definitely done after all the settlement of the transactions is carried out. Intraday updates from different systems they need to collect and final balance they need to provide it. तो हर एक बैंक मोस्टली एक एक्सेल ऐसा मेंटेन करती है फॉर एवरीडे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. ठीक है, उनका हर एक ब्रांच वाइज ऐसे एक एक्सेल मेंटेन होता है जहां पे वो लिखेंगे इतना कैश हुआ इनपुट आया और इतना कैश आउटपुट गया, बिकॉज दे नीड टू बैलेंस दैट पर्टिकुलर कैश रिक्वायरमेंट्स एवरीवेयर. वरना पता ही नहीं चलेगा ना कि आज ये इस पर्टिकुलर बैंक फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक की इस ब्रांच में आज कितना पैसा जमा है कि उधार है, व्हाटएवर. ठीक है, so this is one of the reasons that cash management is important. Now nostro reconciliation we have seen. In order to deal in the foreign exchange market and transact in foreign currencies, the banks will be maintaining their accounts with other banks globally and this is known as the nostro account. Okay, so we have already discussed nostro account, foreign players over there. So write one question, what is nostro account? Okay. The nostro reconciliations are an accounting process which is used to compare two sets of records to ensure that the figures are in agreement and are accurate in nature, and it is commonly used for currency settlement. So basically, of course, this reconciliation will be used for maintaining the books of accounts for your foreign clients, basically nostro account. Okay, so your SBI will be your, say for example here for trading account purpose, वहां पे कोई दूसरा बैंक होगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड से फॉर एग्जांपल, तो दोनों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको चाहिए सो दैट वी विल बी एबल टू मैच द ट्रांजैक्शंस फॉर अ गिवन क्लाइंट हु इज ऑलरेडी स्टेइंग इन यूके. ओके, नॉस्ट्रो अकाउंट्स इंडियन सिटीजंस के लिए नहीं होगा. ओके, so ledgers will be of course entries which are generated internally and entries from the nostro banks will be collected through different statements and then you will be checking all the data. Of course, matched transactions will be allowed, unmatched transactions will be missed out. Through this process reconciliation, banks can track the status of whatever the cash is received, what is the amount paid, track the unsettled transactions so that they will be able to recheck where the errors have happened. For instance, banks can ensure that interbank cash flows from forex spot, forwards, swaps, borrowings, placements, and derivatives are being settled. अगर settle नहीं हुआ है तो वो दिक्कत होगा. Reconciliation will help in identifying unsettled discrepancy in transactions and definitely it will help in quick remedial actions. So that is how the actions will be taken in the case of any errors or mistakes found in the transaction accounts. Okay, these are reconciled against internal debit and entries arise. Okay, nostro credit may arise due to payments received on behalf of customers, interest amount credited to nostro account, and receipts from the interbank deals. And finally, okay, so just write one question over there. When will the nostro accounts will be credited?
Okay, now come to this particular example where, for example, one company has issued bonds worth 1 million or 10 million euros that have appointed Citi as their primary bank. Now Citibank will have a nostro account with the Deutsche Bank Frankfurt, मतलब जर्मनी में, for euros. ठीक है, bonds issue हुए थे यूरो में, तो date of transaction, this is ISIN number that identified we have already seen. Principal amount was this much. 7.5% is the coupon which will be paid semi-annually because bonds है तो ठीक है. कहाँ पे nostro account है? In Frankfurt, Deutsche Bank में. ठीक है, तो journal entry ऐसे होगा, debit होगा internal ledger में that 10 million rupees, and against that whatever the amount of bonds have been purchased that will be credited. Okay, on the other hand, जो Deutsche Bank Frankfurt में है उनको डिपॉजिट आ जाएगा इतने पैसों का, and they need to credit Citibank with that amount of bonds. Okay, so say for example 1 lakh bonds were purchased at a price of 10 million, then that you need to settle it. अब यहाँ पे कहीं जगह पे एरर नहीं आनी चाहिए. एरर कहाँ पे आ सकती है? यहाँ पे गलती से एक जीरो बना दिया, या आपने डेट ऑफ इंटरेस्ट पेड सेमी एनुअली की जगह गलती से एनुअली लिख दिया, या तो ट्रांजैक्शन डेट गलत डाल दिया, 1/1/2012 की जगह 1/1/2011 कर दिया, देन आल्सो यू विल बी फेसिंग मैनुअल एरर्स. ओके, नाउ इंटरेस्ट व्हाटएवर विल बी रिसीव्ड फॉर द फंड्स विल बी डायरेक्टली गेटिंग डिपॉजिटेड इनटू द नॉस्ट्रो अकाउंट. तो डॉइचे बैंक का डेबिट होगा 5000 और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट दिया जाएगा. इंटरेस्ट इनकम विल बी अनदर अकाउंट क्रिएटेड. इफ एनीवन नोज इन द बैलेंस शीट, किसी को थोड़ा बहुत आता है अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करते हैं? Okay, so now this over here interest income is the another account created so that उसको credit किया जाए और Deutsche Bank को debit किया जाए. This is purely accounting structure, nothing else. I think fund accounting अगर है तो शायद इसका ये example you can go through this. ठीक है? In the books of account, of course, now interest expense के तौर पे वो debit किया जाएगा. Citibank will be then credited. Why? Because ये books of accounts है किसके? Citibank का, और ये books of account है Deutsche Bank के. ठीक है? Nostro debit entries are reconciled, of course, against the internal credit entries, and this arises due to honoring the payment messages which are sent by the bank. Charges will be debited, of course, and payments on the account of the interbank dealing transactions will be mentioned. So finally, your bond issued by Google is being repaid on maturity. अगर होता है तो in the books of accounts of Citibank, bond holders जो भी थे तो उनका वो डेबिट हो जाएगा और अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट में Deutsche Bank पे. और Deutsche Bank का क्या होगा? Citibank का जो स्टेटमेंट है वो डेबिट होगा, डिपॉजिट जो बाकी का अमाउंट था वो वापस किया जाएगा. ठीक है, सो जस्ट लाइक वी आर कैरिंग आउट 3 डिफरेंट अकाउंट्स ओवर हियर. एक डॉइचे बैंक का अकाउंट है, एक सिटी बैंक का है, और एक इंटरेस्ट इनकम एंड रिसीव्ड का है. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गिव द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन बोथ द अकाउंट्स. ओके, नाउ ट्रेड इज आल्सो मैच यूजिंग डिफरेंट सिस्टम्स. ऑलरेडी मतलब जिसको सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बोल सकते हैं. स्मार्ट स्ट्रीम, TLM, Oracle FlexCube are some of the leading software which are used for reconciliations. So which applications or which software applications are used for Nostro reconciliation? Write the question. Which software applications are used for Nostro reconciliation? Now, of course, we have already seen which different trade details we can compare. Amount. Repeat करो क्या question? Value date, transaction reference number, simple amount or bunch amount if there are more than one transactions, security identifier number, trade date, settlement date, and the direction. Okay. Okay, now what are interest claims? Interest claims are arising out of failed settlement trades, coupon and fee payments if funds not received in the due date in the ordinary course of business as a result of administrative error. For example, semi-annually मतलब 6 महीने बाद भी अगर इंटरेस्ट का एंट्री
accounting entry post नहीं हुआ है, that will be creating another error in the reconciliation process. Now these errors कैसे क्यों होगा? Either calculation 7.5% सेमी एनुअली की जगह क्वार्टरली या फिर एनुअली ले लिया तो भी गलत है. इनकरेक्ट कंफर्मेशन एंड सेटलमेंट, जो भी ट्रेड कंफर्म करना था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स या नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हैव बीन इंक्लूडेड इन द अकाउंट, इफ दे आर नॉट करेक्टली गेटिंग मैच. अनदर इश्यू, मिसिंग फंडिंग डेडलाइंस, जिस डेट के ऊपर ट्रांजेक्शन सेटल करना था वो अवेलेबल नहीं है. एजेंट बैंक हैंडलिंग एरर्स, ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स और मैनुअल एरर्स. लेट कंफर्मेशन, पेमेंट इज नॉट क्रेडिटेड और क्रेडिटेड टू द रॉन्ग अकाउंट. एंड सिस्टम डाउन टाइम. अब ये सब challenges हो सकते हैं for all types of administrative errors that you might be facing in a given situation. Okay. 9. नहीं, वो बाद में होगा, दोपहर में. Okay, claim calculation and compensation rates. Agent banks impose different overdraft rates depending on relationship. These guidelines are not looking to set compensation rates, but to define the process to calculate the claim amount. The rate which is used to calculate the claim amount should compensate the disadvantaged party for any cost, actual or implied. Typically, this will be, of course, the overdraft rate which will be charged by the disadvantaged party's corresponding bank. तो अगर गलती से वो नहीं दिया है तो पेनल्टी भी लग सकती है या एक्स्ट्रा कंपेंसेशन उनको देना पड़ सकता है. The outgoing claim should be clear to distinguish compensation rate which is used for overdraft charges. Overdraft क्या होता है? हाँ, लेकिन अगेंस्ट बैंक, तो बैंक का सिक्योरिटी क्या होगा फिर? या कोलेटरल. चलो हाँ, लेकिन वो कोलेटरल होना चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ. से फॉर एग्जांपल आपकी 5 लाख की एफडी है बैंक में, ठीक है. अगेंस्ट दैट यू विल बी एबल टू यूज योर ओवरड्राफ्ट लिमिट. अब वो भी पूरा नहीं, वो 2 लाख 3 लाख तक ही करेंगे अगर गलती से. और उसका जितना यूज करते हो, फॉर एग्जांपल पहले महीने में मैंने सिर्फ 50,000 यूज किया, देन फॉर द फर्स्ट मंथ ओनली इंटरेस्ट ऑफ ₹50,000 विल बी चार्ज, नॉट ऑन एंटायर 3 लाख अमाउंट विच आई एम गेटिंग एज ओवरड्राफ्ट. प्लीज मेक श्योर ऑफ दिस थिंग. जितना मैं यूज कर रहा हूँ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, उसके ऊपर ही उतना इंटरेस्ट का चार्ज लगेगा, पूरे अमाउंट के ऊपर नहीं लगता है. ठीक है. Okay. Now, what could be the other risk of not performing reconciliation? Of course, missing trade or missed out trade. Either the investment manager or the custodian can miss this recording of the trade details like dividend, interest, etc. If the situation is not resolved, of course, the market value of the fund will not be correct, and the NAV of the portfolio will be having a misrepresentation to the clients. Just underline or just write this line. The NAV of the portfolio gets affected in the missed out transactions. The NAV of the portfolio gets misrepresented in the missed out transactions. मैं आज पोस्ट करने वाला था दीपक नाइट्रेट का, ब्रेकडाउन था उसका. लगता है बहुत सारे स्टॉक्स की पिटाई होने वाली है अगले 1 महीने में. Inflation is the only major concern as of now. Okay, and that is why these rates have been increased by RBI और वहाँ पे फेड ने भी. अगर ऐसा आया तो बैंक निफ्टी का पुट ले लो और क्या. मतलब
तो गोल्ड भी अभी तो थोड़ा सफर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली बढ़ना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड हैज टू राइज, गोल्ड एंड क्रूड ऑयल बोथ। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट कॉन्ट्रा है, और स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट्स विल बी डाउन, बोथ द थिंग्स विल हैपन। ठीक है, या तो मई मंथ पूरा करेक्शन में ही जाएगा, ऐसा अभी के लिए तो इंडिकेशंस है, अनलेस एंड अनटिल कुछ कंट्रोल में नहीं आता है। बाकी सब जितने भी लोग पोस्ट करते हो ग्रुप में, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। ऑफ कोर्स सब आर्टिकल्स तो पॉसिबल नहीं होंगे डेफिनेटली, लेकिन कुछ कुछ हाँ। आपका भी जो शेयर हो रहा है वो ठीक है, लेकिन दूसरे जो पोस्ट करते हो वो रीड करते हो कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दैट इज व्हाई वी आर शेयरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, बुकिंग एरर, ट्रेड विच इज इनकरेक्टली बुक बाय द कस्टोडियन एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर इफ इनकरेक्ट डेटा इज बीन बाय की जगह सेल कर दिया। अब अभी लास्ट नहीं, कब परसों ही हुआ था, गलती से एक मतलब ट्रेडर है, उसने लेना था पुट 10,000 क्वांटिटी, डाल दिया कॉल ऑप्शन, डायरेक्टली लॉस। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा। इनकरेक्ट क्वांटिटी लेना था 500, सॉरी 50, और इन लोगों ने ले लिया 500, अब वो हिट हो गया, अलग बात है। ठीक है, तो दैट इज इनकरेक्ट। ऑफ कोर्स द प्राइस, मुझे लेना था 100 रुपए पे और गलती से मैंने ले लिया 200 पे, दैट इज ऑल्सो अनदर चैलेंज। सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड, बट ऑफ कोर्स दिस इज लाइक मोर ऑफ अ फ्रंट डेस्क ऑपरेशंस, सो अभी के लिए डायरेक्टली आपका चांस वो नहीं आएगा, बट हाँ, यू नीड टू एटलीस्ट बी अवेयर अबाउट इट। Financial and reputational issues, as the price of the security would have moved within the moving market, fixing the error at a later point in time will also lead to loss, right? ऑलरेडी मार्केट चालू है और अभी मैं उसको रेक्टिफाई करने जाता हूँ तो डेफिनेटली मेरे लिए वो प्रॉब्लम होगा। So you cannot rectify that particular error, and hence all those financial loss or the reputation loss of the organization will be bad to has to be backed by that particular company. ठीक है, दिस इज जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने जो पढ़ा है, और तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स। ओके, okay, now different type of accounts are being prepared by both the custodian and the investment banker. So normally we see the pending trades because the investment manager will be maintaining the books of accounts on the trade date basis, whereas custodian will be maintaining his books of accounts on settlement basis. Please write it down. अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर है तो वो ट्रेड डेट के ऊपर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, और अगर वो कस्टोडियन है देन ही विल बी मेंटेनिंग हिज बुक ऑफ अकाउंट ऑन सेटलमेंट डेट। So say for example, during the month, 50 shares of Abbott and 100 shares of GE Corporation were sold at the price mentioned, but investment manager will be maintaining his books of accounts on the trade date, जब trade execute होता है तब, and custodian will be maintaining the books of accounts on settlement date. तो settlement 1 या 2 दिन के बाद जो होता है वो T+2 days we have discussed, right? So custodian के books of accounts में 2 दिन के बाद entry आता है, और investment banker on the trade date itself his books of accounts gets updated. तो शायद कभी कभी आपको वो lagging लगेगा, this custodians are running behind in their books of accounts. Okay, so this is how it will be carrying out. एक म्यूचुअल फंड का कैसे दिखता है, स्क्रिप्ट मेंशन्ड है, क्वांटिटी मेंशन्ड है, प्राइस, मार्केट वैल्यू, एवरीथिंग्स आर बीइंग मेंशन्ड, बट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कस्टोडियन इट विल बी getting settled on a different basis. Why? Because the only reason is that see, यहाँ पे बैलेंस एज पर इन्वेस्टमेंट बैंकर होना चाहिए था 68,000 और कस्टोडियन के हिसाब से आ रहा है 73,000, तो 4,000 का वो जो डिफरेंस है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टॉक हैज बीन सोल्ड ऑफ Abbott and GE on this date, so this is getting reflected in another account but it is not getting reflected in the books of accounts of that particular investment manager. Okay,
इसलिए वो इसमें अमाउंट ज्यादा दिखा रहा है कस्टोडियन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वहां वो सेल का एंट्री अभी रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ है, इसलिए अमाउंट इज मोर। 68,000 ऑलरेडी हैज बीन सेटल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकर, लेकिन कस्टोडियन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो 2 दिन के बाद सेटल होगा अमाउंट 5,000 का जो भी बेचा है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस वी आर सीइंग। कैश एंड ट्रांजेक्शन रिकंसिलिएशन are carried out to ensure that all the transactions from the previous business day are accounted by the mutual fund and the custodian bank. Any error in the completion of this task will result into same missing out of trade, erroneous cash reconciliation, and accounting overdraft. Okay, so these are of course the errors or the challenges. I think more or less for every missed out transactions we will be finding it difficult. इश्यू सेम रहेगा। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है कि आपको कैसे भी करके दोनों साइड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल्स मैच करनी है। वन थिंग, उसमें कोई भी एरर्स आती है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी आता है, तो आपको चेक करना है कौन से सोर्स से वो दिक्कत आई है। देन यू नीड टू कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, काउंटर पार्टी, कस्टोडियन, रेगुलेटर या जो भी है जिससे वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आई है, उससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। देन यू नीड टू मैनेज दैट पर्टिकुलर एरर। अगर टेक्निकल फॉल्ट है तो ऑफकोर्स सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी रिजॉल्व लेटर। मैनुअल फॉल्ट है देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दैट एरर। करेक्ट? ये ओके, थोड़ा ब्रेक ले लेंगे, 4-5 पेज है, चलो ले लो, थोड़ा लंबा मुझे भी लग रहा है ये, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द रिकंसिलिएशन में इतना ही आता है। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग टू मच इनटू द डीपर सेंस ऑफ अकाउंटिंग जर्नल्स। अकाउंटिंग जर्नल की एंट्रीज आती तो थोड़ा और डेप्थ में जाता, बट सिंस यू आर एन इन्वेस्टमेंट बैंकर और मैनेजर राइट नाउ, तो उस रोल में आपको सिर्फ डेटा ही कंपेयर करके रिमूव करना है। म्यूचुअल फंड का जस्ट इमेजिन हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस मस्ट हैव बीन गेटिंग फॉर अ गिवन डे। अपने DIIs है ना म्यूचुअल फंड्स, तो डेली कितने ट्रांजेक्शंस दे विल बी सेटलिंग। गलती से एक ट्रांजेक्शन भी इधर उधर हो गया, मैन्युअल एरर आ गया, जीरो का एक और बढ़ा दिया, it will be a hefty task for them to identify that particular error and then sort it out. Okay, chalo, online students, any doubts so far? Pallav, any doubt? हाँ सर, एक डाउट था सर। एक वो मैं भी कल पढ़ रहा था, तो उसमें एक और जो मतलब 2 टाइप्स के और कुछ होता है, बैलेंस शीट रिकंसिलाइजेशन भी होते हैं और एक क्रेडिट कार्ड रिकंसिलाइजेशन भी होते हैं सर। उसमें क्या आते हैं? कहाँ पे था सर? एक्चुअली में मैं नेट से पढ़ रहा था। अच्छा, तो उसमें बैलेंस शीट रिकंसिलाइजेशन का ये मतलब भी दिया हुआ था। ओके। हाँ, तो सर उसमें ऑल द इनकम स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो वही भी मैं बोल आगे रहा हूँ कि बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा बेसिक नॉलेज रखो, डोंट गेट टू मच डीपर इनटू इट। व्हाई? बिकॉज दैट इज मोर फ्रॉम द अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो वो आपका रोल नहीं है। आपका रोल ये है कि आपको चेक करना है कि कहाँ से एरर आ रही है, कस्टोडियन से आ रहा है डेटा, या फिर क्लाइंट के एंड से आ रहा है, या वो नॉस्ट्रो अकाउंट का बैंक का डिटेल्स वहां से आ रहा है। सो फ्रॉम ऑल दोस पर्टिकुलर एनी सोर्सेज ऑफ अकाउंट्स यू नीड टू क्रॉस चेक एंड देन आइडेंटिफाई। ओके ओके okay, we are taking a break and we will reconnect in some time. चलो।